Hello students, welcome to my channel Basic Mathematics. We were discussing about the problems in exercise 1A of mathematical reasoning. Up to question number 10 we have discussed. Now question number 11. Determine the truth values of P if and only if negation of Q. Question number 11. 1A and determine the truth values of P if and only if negation of Q when the biconditional statement P if and only if Q is true. What is given? P if and only if Q is first, it is false. Is false. F. P if and only if Q is false. That means what? This implies P and Q have opposite truth values, right? Opposite truth values. They have opposite truth values, right? Because कौन हमें पढ़िचे गोटे बाइकंडीशनल स्टेटमेंट केतेबेले ट्रू हबो जेतेबेले दीटी जाक स्टेटमेंट रो समान ट्रुथ वैल्यू थिबो ता माने P एवं Q बोथ आर ट्रू और बोथ आर फॉल्स ताले एठी जेतु फॉल्स आसुची ताले दीटा जाक समान ट्रुथ वैल्यू नाही गोटे ट्रू गोटे फॉल्स थिबो तेनु P ट्रू थिले Q फॉल्स थिबो P फॉल्स थिले Q ट्रू थिबो सेति पई कोआला P एंड Q हैव ऑपोजिट निश्चित भाव रे एठो हमें कंक्लूजन ड्रा करि परिबा जेहेतु ये बाइकंडीशनल स्टेटमेंट टा फॉल्स अछि प्राइम स्टेटमेंट दीटा एकर ऑपोजिट ट्रुथ वैल्यू निश्चित भाव रे अछि राइट से पचारछि कोन P if and only if negation of Q ता माने एठी हमें पहले P and negation of Q have same truth value they have same truth values that means देखो P जदि ट्रू था कि Q फॉल्स अछि ताहले P एंड नेगेशन ऑफ Q कोन हबो ट्रू ट्रू राइट जदि P एंड Q फॉल्स ट्रू अछि ताहले P and negation of Q will be false false so इदि केस ट्रू ट्रू हबो नले भितरु they have same truth values P एवं Q जदि opposite truth value हेले ताले P and negation of Q have same truth values if they have same truth values so what is the truth value of their biconditional statement is true but this is true. Similarly, second case, if this is true, then this has opposite truth value, so it will be false. Okay. Then, as I ebe 12 number, state the converse, inverse, and contrapositive of each of the following propositions, stating it as a conditional whenever necessary. ता माने एठी केते गुडा कंडीशनल स्टेटमेंट देइची जो गुडा करो कन्वर्स इनवर्स आउ कंट्रापोजिटिव हमहु बाहर करियो पड़ियो कन्वर्स इनवर्स आउ कंट्रापोजिटिव ता भीतर कोन हिची केते गुडा कंडीशनल स्टेटमेंट फॉर्मेट रे अछंती इफ देन फॉर्म रे अछंती आउ केते गुडा इफ देन फॉर्म रे नथिले मध्य ताकू हमें if then form रो statement ताकू if then form रे ही रखिबा right let us see first question we will see question number 12
Question number 12. 12 number 1. If ABC is equilateral, then its three angles are congruent. Its three angles are congruent. If ABC is equilateral, then its three angles are congruent. जदि एटा गोटे इक्विलैटरल, एक्चुअली इक्विलैटरल मींस इक्विलैटरल ट्रायंगल आमे का कहबा जहार जो त्रिभुजर सबु बाहु गुडा समान, राइट, all sides are equal, the triangle where all the sides are equal. Yes, so if ABC आमे एटी दीटा स्टेटमेंट नवा. Suppose let P हला ABC is equilateral. Q हला its three angles are congruent, right? P hela ABC is equilateral, Q hela its three angles are congruent, right? So what is this statement? So if P, then Q is the statement. If ABC is equilateral, then its three angles are congruent. Its three angles are congruent. जदि ABC इक्विलैटरल हुए ताहले तार तीनटा जाक एंगल इक्वल आसीबे, राइट, थ्री एंगल्स आर इक्वल. ताहले यार हमें बाहर करबा कोन कन्वर्स इनवर्स, ऑलरेडी इट इज इन if then part. So write its converse, inverse and contrapositive. What is the converse? Converse is if Q then P, which is like this. If Q then P, that means if the three angles of a triangle ABC are congruent, then it is equilateral. नहीं से कोची गोटे ट्रायंगल जदि इक्विलैटरल हुए, गोटे त्रिभुज जदि समबाहु त्रिभुज हुए, ताले तार प्रत्येक कोण तीनोटी जाक कोण समान. कन्वर्स कोण हबो जदि गोटे त्रिभुजर तीनोटी जाक बाहु सॉरी तीनोटी जाक कोण र परिमाण समान हुए, ताहले त्रिभुजटी एक समबाहु त्रिभुज. कोनटा if the three angles of a triangle ABC are congruent, then it is equilateral, right? It is like converse. What is the inverse? Inverse is if negation of P, then negation of Q. If ABC is not equilateral, if ABC is not equilateral, then
its three angles are not congruent. Its three angles are not congruent. They are not congruent. If negation of P, then negation of Q. Contrapositive. Contrapositive is if negation of Q, then negation of P. Right? If the three angles of a triangle ABC are not congruent, then it is not equilateral. Equilateral. Converse, inverse, contrapositive. कौन कहला? If ABC is equilateral, then its three angles are congruent. If P, then Q. Converse है if Q, then P. Then if the three angles are congruent, if the three angles of a triangle are congruent, then it is equilateral. Converse, inverse कौन है? If negation of A जिनस जानी मन रखियो पड़ो. Converse is this, inverse is this, contrapositive is this. कौन अच्छे थी inverse? If negation of P, then negation of Q. हम P Q तो separate कर लिखी दे इसे से अनुसार. What is negation of P? ABC is equilateral. Negation of P आपको ABC is not equilateral. So इसलिए if ABC is not equilateral, then its three angles are not congruent. And contrapositive. If negation of Q, then negation of P. If the three angles of a triangle ABC are not congruent, then it is not equilateral. Right? So this is how we have to find out the converse, inverse and contrapositive. एबे आसो देखिबा गोटे प्रॉब्लम जोट की एक्जेक्टली इफ देन फॉर्म रे लिखा होनी किंतु मीनिंग से बुझौछि. कंडीशनल स्टेटमेंट ता किंतु एक्जेक्टली इफ देन फॉर्म रे नाही. ताको हमें से कहूछि जदी नाही ताको लेखो wherever it is necessary, stating it as a conditional statement wherever necessary. कंडीशनल फॉर्म रे नाही ताकू कंडीशनल फॉर्म को आनी की तार कन्वर्स, इनवर्स, कंट्रापोजिटिव हमें बाहर करबा. राइट? लेट अस सी one such. Yes, fourth bit इबे को yes अच्छी फोर्थ वेट अच्छी कोन गोटे अधे प्रोब्लेम कर दउची तमे अन्य सब बीट गुडा को करिवो. कोन अच्छी sum of two odd integers is even. Fourth bit sum of two odd integers is even. Right? If then conditional form रे नहीं कोई चिंती दुईटी अजुग्म संख्यार जोगफल जुग्म अटे. Sum of two odd integers is even.
ताले कौन करिबा ताको हमें if then form रे लिखिबा केमति लिखिबा if two integers are odd conditional form तार कौन conditional form if p then q ए form रे if two integers are odd sum of two integers if two integers are odd then their sum is even फिर p हला कोन p is two integers are odd q कोन हला their sum is even two integers are odd tesla their sum is even p hela two integers are odd if two integers are odd then their sum is even right so this is if p then q conditional form re asigala so let us write its converse it is very simple converse is if p then sorry if q then p if q then p कौन होगा if the sum of two integers is even टिके चेंज करिया पड़ो if their sum first केमते हम pronoun यूज करबे तेनु कहार sum two integers if the sum of two integers is even then they are odd right they are odd if two integers are odd then their sum is even if the sum of two integers is even then they are odd this is the converse what is the inverse if negation of p then negation of q कौन होगा ठीक if two integers are not odd if two integers are not odd then their sum is not even there are integers यदि odd ही नथिबे then their sum is not even and contrapositive is what if negation of q then negation of p if the sum of two integers is not even then their sum is sorry then they are not odd they are not odd they are not odd right
If the sum of two integers is not even, then they are not odd. तो एवरे ट्राई करो प्रत्येक स्टेटमेंट को प्रॉपर इफ देन फॉर्म रे रखो ता भितरु इफ पी देन क्यू पी के क्यू के तापरे कन्वर्स कोन इफ क्यू देन पी इनवर्स कोन इफ नेगेशन ऑफ पी देन क्यू and contrapositive if negation of q then negation of p यार अनुसार तापर लिखिया पई सहज है ओके so in this we write it then question number 13 are the following pair of statements negation of each other let us see okay question we will go to question number 13 here two statements are given right we have to test whether one is the negation of the other or not let us see one such question then we will do the other questions कौन दिया है चिट्ठी first bit it is question number 13 first bit the number pi is not a rational number the number pi is not a rational number is not a rational number it is not a rational number right this is given the number pi is not an irrational number the number pi is not an irrational number देखो ये कौन है पाई इज नॉट ए रेशनल नंबर जे रेशनल नुहे कौन है इरेशनल ता माने से कहूची इट इज एन इरेशनल नंबर एठी कौन कहूची पाई इज नॉट एन इरेशनल so this is the negation of this so they are of negation of each other negation of each other is not an irrational number ता माने पाई इज ए रेशनल नंबर एठी कहूची पाई इज नॉट ए रेशनल नंबर so यार negation ये तेणु तमे तले जति देछि त देखिदब कि कार नेगेशन ना नै any real number either it is rational or it is an irrational write the component statement of the following compound statement and check whether the compound statement is true or false इति गोटे एक्जेक्टली कंपाउंड स्टेटमेंट से हमको देछि चेक करिया कहूची जे फर्स्ट सेमानकर कंपोनेंट फर्स्ट लेख से कंपाउंड स्टेटमेंट रो एवं से कंपाउंड स्टेटमेंट टा ट्रू ना फॉल्स चेक कर केन चेक करबा यूजिंग द लॉग्स और यूजिंग द टेबल राइट यस क्वेश्चन नंबर 14 राइट कौन अछि सेटा क्वेश्चन नंबर 14 24 is a multiple of 4 and 6 24 first bit is a multiple of 4 and 6 right अच्छा एटी इंडिविजुअल स्टेटमेंट हम बाहर पड़े let the prime statements are let the prime statements are k p
24 is a multiple of 4. Is a multiple of 4. It is one statement. Q 24 is a multiple of 6. Right? तो से जो statement कौन होगा सेटा P and Q. 24 is a multiple of 4 and 6. It is a multiple of 4 and 6. So this is the compound statement. What is this? It is a conjunction. It is a conjunction. When it will be true? Yes. Axiom मन अछि conjunction केतेबेले ट्रू हबो जेतेबेले दीटा जाक प्राइम स्टेटमेंट ट्रू थिबे तले एठी कोन हेची प्राइम स्टेटमेंट 24 इज ए मल्टीपल ऑफ 4 24 टा 4 रो मल्टीपल बा गुणित को जो ओडिया रे हम कहूजो 4 रो मल्टीपल ठीक अछि p टा ट्रू yes this is true what is about the truth value of this 24 is also a multiple of 6 yes this is also true. So 24 is a multiple of 4 and 6. What will be the truth value of this? It will be true because both P and Q are true. तमे एई भली भाबरे तमे कंपाउंड स्टेटमेंट रो फर्स्ट प्राइम कंपोनेंट उडा बाहर कर दियो से कंपाउंड स्टेटमेंट ता सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन रे कोन हबो देखो से रोडे कंजंक्शन कि डिसजंक्शन कि कंजंक्शन डिसजंक्शन मिसी के अछि ताल तार हमें बेसी कॉम्प्लिकेटेड हेतिले हमें टेबल द्वारा जान परिबा नचेत केवल एक्सियम यूज करके जेमति एठी हमें कले एक्सियम यूज करके तार टेबल तार ट्रुथ वैल्यू हमें कहि दे परिबा तेनु एगुडा सब सेमति ट्राई करो. देन क्वेश्चन नंबर 15 कोन अछि identify the quantifier of the following statements right quantifier हम कल पढ़िथिले ये previous lecture रे हम डिस्कशन करिथिले what is a quantifier quantifier it quantifies the adjective of the variable according to its adjective right जेमति की there exists a number which is equal to its square रे गुडे नंबर रा प्रॉपर्टी नंबर रा एडजेक्टिव लगला जे से कहूची the number which is equal to its square जो नंबर रा तार निजर वर्ग there exists ताले क्वांटिफायर के क्वांटिफाई करची जे हम कहूची there exists गोटे अछि के right so there exists this is the quantifier there exists this is the quantifier right existential quantifier दाउची existential quantifier there exists a number which is equal to its square k 1 this statement is true because 1 is the square of itself 1 is equal to 1 square also 0 is equal to 0 square right so these are the numbers anyway check kare darkar nahi yes here the quantifier is there exists for every real number x is less than x plus 1 property hela x is less than x plus 1 एठी कहूची for every x for all x is the
For all is the universal quantifier. Universal quantifier. तो এইভাবে ভাবে আমি quantifier গুড়া কি কোটি অଛନ୍ତି ଦେଖିবো ତା ভিତରେ ତାପରେ ଅଛି write the negation of the following statement. तले केते गुडा स्टेटमेंट अछि तार नेगेशन बाहर करिवा. देबे बाडा question number 16, right? 16 कौन अच्छी write the negation. एहला every living person is not 150 years old. Every living person is not 150 years old. Every living person is not 150 years old. कौन हो? Every living person is 150 years old. Every living person is 150 years old. Living person is 150 years old. Every living person is not 150 years old. That means एक के बुझले हबो देखो कौनसी living, that means no living person. No living person या माने कौन? No living person is 150 years old. এটা জানিস 150 वर्ष काहे ताले हम कोन करिया तार negation आसीबो. If this is p, its negation will be there exists a person who is 150 years old. केही नुहंती 150 years old. ता मन तार नेगेशन आसबा गुडे अछि जणे एटलीस्ट जणे के अछि जहार एज 150 years old, जे की 150 years old, right? So this is about your exercise, first exercise of a mathematical reasoning. Then we will discuss about the validity of statements. Validity of statements. Then exercise, right? What is validity of a statement? Validity means the statement have truth value true. If a statement is true, we say that in mathematical way we say that it is a valid statement. If it is not true, it is an invalid statement, right? If a statement is true,
then we say that it is a valid statement. सिंपल स्टेटमेंट जोड़ाक सेगुड़ाकर वैलिडिटी प्रूफ दरकार नहीं केवल आम डिटरमिन कर ट्रू ना फॉल्स ये जमी आम कहले 24 इज ए मल्टीपल ऑफ 4 24 is a multiple of 4. Right? This is a valid statement. Why? It is true. It is true. So it is a valid statement. जदि हमें कहबा 24 is a multiple of 7. It is an invalid statement because it is false. 24 टा केबे 7 द्वारा विभाज्य होबनी बा 24 टा 7 रा गुणितक नुहे मल्टीपल नुहे. So it is not a valid statement. It is not a valid statement. Right? तो एई भली भाबरे हमें देखिबा जे सिंपल स्टेटमेंट गुडा कोटा वैलिड कोटा इनवैलिड हमें एटा कहि दे परिबा. Validity of a statement. Validity of a statement. Validity of a statement. A statement, if a statement is a valid statement in mathematics if it is true. If it is true. जदि ट्रू हुए हमें कहबे इट इज ए वैलिड स्टेटमेंट. जेमते हम एग्जांपल ले 24 is a multiple of 4. It is a valid statement. 24 is a multiple of 7. It is an invalid statement, right? It is an invalid statement. तो कथा होची सिंपल स्टेटमेंट गुडाकर वैलिडिटी हमें सहज रे जानि परिबा बा डिटरमिन करबा. किंतु कंपाउंड स्टेटमेंट रो वैलिडिटी केम जानिबा केमती टेस्ट करबा. राइट? हमें जहा एक्सियम पढिचे से अनुसार सपोज वैलिडिटी ऑफ ए कंजक्शन P and Q केमती टेस्ट करबा. Step 1. Test the validity of P. Test second step 2. Test the validity of P of Q. If P and Q both are true, then P and Q is true. Then P and Q is true. तामने that is valid. जे धीरे ट्रू हैला ताहले एटा हमें कहबा it is a valid statement. What about disjunction? Validity of a disjunction. Validity of disjunction. What is that statement? P or Q. What is the validity of this statement?
yes केतेबेले ट्रू है p किंबा q तांका भितर जणे के ट्रू हेले ट्रू हे ता माने आइदर बोथ आर ट्रू और one of them must be true ताले गोटे स्टेटमेंट p और q हमें मने कर हम कहबा सपोज p is false p is not valid we shall show that q must be true ଯଦି p true right validity case 1 assume p is not true but p is false then q must be true जदि हमें प्रमाण करि पाले must be true case 2 step 1 एटा step 2 रे कोन करिबा assume q is false then p must be true यदि एई कथाटी हेई गला जदि p false होची q निश्चित भाव ट्रू होची जेते q false अछि p must be true ता माने कथा हला p q दीटा जाको false हबार चांस नाही दीटा जाको false हेले सिना एटा false हबो तेनु जेतेबेले एती कथा हला ताहले हम कहबा इट इज ए वैलिड स्टेटमेंट राइट जेतेबेले p टा false थिले q टा ट्रू हे जाउची q टा false assume कले p must be true हे जाउची से केस रे कहबा में p और q is a valid statement p or q is a valid statement right so next time we will discuss about the validity of conditional statement and biconditional statement right you have to give examples right so it will take time so anyway we have finished all the problems we have discussed about the problems of your exercise 1a then about the validity of statements like conjunction and disjunction in my next lecture I will discuss about the validity of conditional statement and biconditional statement next lecture re ame conditional statement एवं biconditional statement रो validity ता माने केते बेले गोटे conditional statement true होची कि नाही तो केमति टेस्ट करिबा आउ गोटे biconditional statement true ना false केमति हम टेस्ट करिबा राइट ई कथा गुडी का हम नेक्स्ट लेक्चर रे पढिबा हां let us stop here thank you all and तुमे सब सब्सक्राइब करो इमीडिएट ए चैनल को एवं तुम मध्य रे संग मान भितर शेयर करो so that we will get more scope to discuss more things right okay thank you